Hello everyone. Today we are going to study the important opposite words of chapter न्याय मंत्री and मंत्र तंत्र. In किताब की कहानी chapter also there are some opposite words, but we have completed or we have discussed the grammar portions of किताब की कहानी before. That's why I'm not including that chapter. Okay, so let's see the opposite words of Nyay Mantri and Mantra Tantra chapter. Now, first word is Saubhagya, means luck. So we have to write the opposite of luck, means unluck. So what will be the opposite of Saubhagya? It is Durbhagya, unluck. Luck opposite unluck. Saubhagya, Durbhagya. Next one is Sahmat. Sahmat means agree. So agree का opposite होगा disagree. सहमत का opposite होगा असहमत. Okay, agree opposite disagree. That is सहमत opposite asahmat. Third one is nyay, justice. Opposite will be injustice. Nyay. What will be the opposite of nyay? It is anyay. Okay, saubhagya, durbhagya, sahmat, asahmat, nyay, anyay. Next one is gun. Gun means quality or merit. We can use anyone. So its opposite will be merit, opposite demerit. Or we can also use the word defect. So what will be the word? Yes, it is dosh. गुण का विपरीत है दोष. ओके, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सहमत, असहमत, न्याय, अन्याय, गुण, दोष. नेक्स्ट वन इज संध्या. संध्या मीन्स इवनिंग और इवनिंग का ऑपोजिट होगा मॉर्निंग. ओके, सो संध्या का ऑपोजिट है और विपरीत है प्रातः काल. इट इज प्रातः काल. संध्या ऑपोजिट प्रातः काल. नेक्स्ट वन इज अंधकार. अंधकार मीन्स डार्कनेस. सो डार्कनेस का ऑपोजिट क्या होगा? यस, इट इज लाइट. सो अंधकार ऑपोजिट इज प्रकाश. अंधकार का ऑपोजिट है प्रकाश. नेक्स्ट वर्ड इज दंड एंड दंड मीन्स पनिशमेंट. पनिशमेंट का विपरीत क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑपोजिट ऑफ पनिशमेंट? इट इज अवॉर्ड. ओके, दंड का ऑपोजिट है पुरस्कार. नेक्स्ट वन इज अपराध. अपराध मीन्स crime. So what will be the opposite of aparadh? It is very easy. Aparadh opposite is niraparadh, innocent. Okay, अपराध का opposite है निरपराध. संध्या का opposite है प्रातः काल. अंधकार का प्रकाश. दंड का opposite पुरस्कार और अपराध का opposite है निरपराध. Next word is anavashyak. Anavashyak means useless. So useless opposite useful. That is avashyak. Anavashyak opposite avashyak. Next one is सुविधा. सुविधा का अर्थ है convenience. सो कन्वीनियंस का ऑपोजिट क्या होगा? इनकन्वीनियंस. सो सुविधा ऑपोजिट इज
असुविधा. सुविधा का विपरीतार्थ है असुविधा. नेक्स्ट वन इज आलस्य. आलस्य मीन्स लेजीनेस. सो इसका विपरीत क्या होगा? इट विल बी हार्ड वर्क. हार्ड वर्क का हिंदी वर्ड क्या है? परिश्रम. सो आलस्य का ऑपोजिट है परिश्रम. नेक्स्ट वन इज प्रसन्न. प्रसन्न मीन्स हैप्पी and its opposite is very simple, happy opposite unhappy. So prasanna, aprasanna. So anavashyak opposite is avashyak, suvidha, asुविधा, आलस्य, परिश्रम, prasanna, aprasanna. Next one is vyay. Vyay means expense or expenditure. एक्सपेंस का ऑपोजिट होगा इनकम. इनकम ऑपोजिट एक्सपेंस. सो व्यय का ऑपोजिट होगा आय. आय मीन्स इनकम. ओके, इनकम ऑपोजिट एक्सपेंस. एंड आवर लास्ट वन इज सुविचार. सुविचार मीन्स गुड थिंकिंग. So its opposite will be bad thinking, and that is kuvichar. Okay, vyay opposite is I and suvichar ka opposite hai kuvichar. So these are our important opposite words. You have to study all these. I hope you all understand these. I told you in Kitab Ki Kahani chapter also there are some opposite words. You have to study that opposite words also with these words.